These IPPs also created opportunities for use of our natural resource, third coal, and setting up of my Mouth project, while provide some of the cheaper power to Pakistan today. These IPPs also opened doors for new roles and new classes of investors, largest Chinese SOEs with billions of dollars of assets, coupled with new structures in terms of project financing backed by Sinosure. At this stage, while we are seeking support from these Chinese companies and lenders to provide us some relief on financing terms, we remain absolutely committed to service all our obligations to the projects and lenders. Now, Chinese IPPs, as we all know, are most diverse and largest investors in Pakistan. Energy sector, with investments in hydel, there's investment in wind, there's investment in solar, of course fossil fuel is there. And as Minister Tara just mentioned, is going to be an important enabler for executing CPEC Phase 2. CPEC Phase 1 was all about creating the infrastructure, and Phase 2 was always about monetizing that infrastructure to create the exportable surplus for Pakistan. Unfortunately, we missed a few years during this whole transition plan, but under Prime Minister Shehbaz Sharif and his leadership and his cabinet, with the President right behind it, with the Chief of Army Staff right behind it, we are very committed in terms of taking CPEC Phase 2 forward, which is all about B2B. Now, I'll just take, I know I was allotted three minutes, so I've gone a bit over that, but I just picked up this report. I've just seen that. And therefore, I just want to mention a couple of things which I saw in this report as I flicked through it. So some of the pain points which have been mentioned by the companies here in Pakistan, one can relate to that. So I've just picked up a little over 50%, where that threshold is 50%. I've just picked up those points where these pain points are there. Lack of policy continuity, instability of PKR exchange rate, difficult in FX remittance due to FX control, high security risks and high security inputs, low administrative efficiency. And one can relate to all of these pain points which have been mentioned by all our friends here and who have been here with us for a while. Now, what I can say, as we have moved towards macroeconomic stability, that and as you've seen in the last 12 to 14 months, the exchange rate have been stable. The foreign exchange reserve in the next 2 weeks will touch $11 billion, which means we are going to get to roughly 2.5 months of import cover. The global standard and global good standard is 3 months of import cover. Now, ladies and gentlemen, we are coming from where we were in 2 weeks of import cover. So it moved in the right direction. So I can assure all our friends here that inshallah, the hiccups that you have seen and the delay that you have seen in terms of your FX and dividend remittances, inshallah, will not recur. Lack of policy continuity, you are absolutely right. And under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership, we always say the government has no business in being in business. Government has to provide policy framework and policy continuity. So you're absolutely right that we need to provide that level of continuity. The high security risks, the Honorable Ambassador is here. He knows very well, under President, Prime Minister, Chief of Army Staff. We are very committed, the Interior Minister, who is working day and night to make sure that this is done, notwithstanding the unfortunate incident that was just mentioned earlier in the meeting today. But we are very committed. And low administrative efficiency. We say to our Chinese friends, we said it to our Saudi Arabian friends a couple of days back, from red tape to red carpet. And we are absolutely clear that we need to bring down the level of bureaucracy and the level of red tapeism that we have in the government, and we remain committed to that. So what you have mentioned here in terms of your pain points, first of all, we relate to that as government,
and we are very clear that we need to do something about it. Now, part two, which is very encouraging, that notwithstanding these pain points, what you mentioned here, my friends, is that majority of Chinese companies are optimistic about their order situation in the next 3 months. Among them, 50% or 47.9% expect their newly signed order amounts or purchase volumes to remain stable, and roughly 40% expect growth, which is absolutely music to my ears, music to our government's ears. 37% of the companies have indicated that they will expand their production sales in the future, and roughly 25% are saying they will increase their workforce. I won't go more into detail of this, but these are what the Minister mentioned, what the Honourable Senator mentioned. This is the true test of long-standing partnerships. Notwithstanding the pain points, you, along with us, remain optimistic about the future of Pakistan. And Mr. Wong, I'm very grateful to you for the invitation today, but also for the first time publishing this kind of report, because this brings transparency. This brings transparency. So I'm very grateful to you. On behalf of the government, we remain very committed, and as Minister Tarar said, we are absolutely over the moon. We are excited that Premier Lee is going to be here as part of the SCO conference, and we look forward to reciprocating even a small portion of the generous hospitality that we received when we were there in Beijing with Prime Minister Shehbaz Sharif, the generosity which was extended to us by President Xi and Premier Lee. Once again, thank you very much for the invitation. Thank you. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की मैशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की है। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी की है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाक चीन क़यादत सी पैक के दूसरे मरहले के पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। सी पैक के तहत दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। चीन पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर्स की
I believe that all of you know that this visit will be another major diplomatic event that China takes for Pakistan right after His Excellency President Xi Jinping paid a historic visit to Pakistan in 2015. 那么习主席在5年的访问当中啊，同巴方确定了中巴全链路战略合作伙伴关系的重要的定位，推动了中巴关系进入历史对话时期，为构建新时代更加紧密的中巴民主共同体注入了强劲的动力。So in His Excellency President Xi Jinping's visit to Pakistan in 2015, he together with the Pakistani leaders has defined the positioning of the China-Pakistan relations as the all-weather strategic cooperative partnership, and has promoted the China-Pakistan relations into the best period of time in history, and has injected strong impetus in building an even closer China-Pakistan community with shared future. 那么李强总理这次访问就是要在新的形势之下，就按照习主席确定的中巴关系发展的大方向以及战略部署，来进一步的加强中巴发展战略对接，来推进高质量共建中巴经济走廊，来加强各领域的互利合作，来推进强化包括上合组织在内的多边协作。And this visit of Premier Li Qiang is aimed to under these new circumstances and in accordance with the general direction and the strategic deployment made by President Xi Jinping to further enhance and seek greater synergy between the development strategies of our two countries, and to promote to further advance the high quality CPAC cooperation, and to enhance our practical cooperation in various fields, and to further enhance our international collaboration, multilateral collaboration, including SCO. 我想强调的是，这还是时隔仅4个月，那么两国总理实现互访，我想这是非常罕见的，或者是非常少有的一个重要的安排。这本身就体现了中方对于巴基斯坦以及对中巴关系的高度的重视。And what I want to emphasize is that this visit will also be the exchange of visits right after His Excellency Prime Minister Shahbaz Sharif visited China only 4 months ago. And this is really a very rare arrangement in history. And this move in itself fully demonstrates the great importance China attached to China-Pakistan relations and to Pakistan. 我相信在双方共同努力之下。 चीन के सफ़ीर चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के गहरे बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हर मुश्किल वक्त में चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे का साथ दिया। ये थी PTV ताज़ा तरीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जानेंगे कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन सी नई इनोवेशंस हैं जो मुतारिफ़ करवाई गई हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। ये भी जानेंगे कि जो पेशेंट का और डॉक्टर का जो डिस्टेंस है वो कैसे मिनिमाइज़ हुआ है इस स्मार्टर दौर में। तो मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं बिलाल अमजद। बिलाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रेस्टिजियस शो। यू वेलकम। बिलाल एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैं बिलाल से गुफ्तगू जारी रखूँगी, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। मौजूदा दौर में जदीद टेक्नोलॉजीज ने इलाज मालजे के तरीकों को निहायत मुअस्सर बना दिया है। हेल्थ
टेक्नोलॉजी से मुराद वो तमाम डिजिटल और तकनीकी आलात, सॉफ्टवेयर और तरीके हैं जो सेहत की सहूलत में बेहतरी लाने और मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने में मददगार साबित हो रहे हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन। ये टेक्नोलॉजी मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान फासलों को मिटाकर ऑनलाइन मुशावरत की सहूलत फराहम करती है। इसके जरिए मरीज अपने घर से ही डॉक्टरों से मशवरा कर सकते हैं, जिससे वक्त और पैसे की बचत होती है, खासतौर पर देही इलाकों में जहां अस्पताल या डॉक्टर तक रसाई मुश्किल है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए मरीज अपनी सेहत के मामलात खुद मॉनिटर कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए डॉक्टरों को बीमारियों की फौरी और दुरुस्त तशखीस में मदद मिलती है। आने वाले वक्त में हेल्थ टेक का दायरा मजीद वसी होने का कवी इम्कान है, जिससे लोगों को बेहतर और फौरी तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। टेक्नोलॉजी के आने से काफ़ी चीज़ें फ़ास्ट हो गई हैं। अब लोग इंस्टेंटली अपने जो सॉल्यूशंस हैं मेडिसिन के हवाले से वो ले सकते हैं। मेडिसिन भी उनको डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जा सकती है। नहीं होगा कि अगर अमेरिका ना राजी हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये विजन 2030 पूरी उम्मत के लिए है। अब इससे आप इस्तेफादा करें या ना करें। जो आप हज उम्रा का काम करने वाले हैं, मुझे वो दौर भी याद है 1988-87 के जब बिस्तरा लेके जाते थे सऊदी सफारत खाने के बाहर और 3-3 दिन वहां रहते थे एक उम्रा वीजा लेने के लिए। और आज आप नेट पे बैठते हैं, 2 से 3 मिनट में आप वीजा निकाल लेते हैं। जब 2015-16 में अमीर मोहम्मद बिन सलमान ये बात कह रहे थे कि मैं उम्रा 10 मिलियन कर दूंगा साल का, 1 करोड़। हम कहते कैसे मुमकिन है। इस साल 1 करोड़ 10 लाख उम्रा लोगों ने किया है 2023 में। जब वो कहते थे कि मैं 50 लाख हज कर दूंगा, यार कैसे मिला तो उतना सही है, कैसे मुमकिन है, ये क्या बात हो रही है। इस साल जो हज हुआ है 70 लाख का आदद बनता है। अगर इसके मुताबिक हाजी आए तो 50 लाख तो बहुत पीछे रह गया है। और मैं खौफ को, अगर के इस वक्त वो साबका हो चुके हैं, नए आ चुके हैं, मैं ये मुबारकबाद दूंगा। अमीनुल्लाह साहब यहां बैठे हैं, हमारे भाई सनाउल्लाह साहब नहीं हैं, इम्तियाज साहब बैठे हैं, कि इन्होंने मुझे फंसाया। ये फंसाने वाले जो मुझे थे ये इम्तियाज साहब हैं, ये बैठे हुए, मुझे फंसा दिया सरपरस्त बना के। तो मैंने कहा भाई सरपरस्त बनाया, कुछ सरपरस्त की बात भी मानोगे। हमारे यहां सरपरस्त उसी को बनाया जाता है जिस बेचारे का सर भी ना हिले। तो मैंने कहा बात भी मानोगे कि नहीं। उन्होंने कहा मानेंगे। आज मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि वो वजारत मजहबी उमूर जिसका आप कहते थे कि दरवाजे से दाखिल बगैर लिफाफे के नहीं हुआ जाता, उसमें अगर किसी ने रिश्वत का 1 रुपया दिया तो खड़ा हो इस साल में, बताइए मुझे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, लाइए को बंदा। ये वही वजारत है। कोई है तो बताए जिसने इस साल अपनी फाइल क्लियर करवाने के लिए, कोई मामला करवाने के लिए वजारत में पैसा दिया हो। ये आप ही की वही वजारत है जिसमें आप दरवाजे से लेकर बड़े दरवाजे तक जो है लिफाफा पेश करते थे। क्या हुआ? बंदे बदल गए, सोच बदल गई, या आप बदले? आप बदले, आपने साथ दिया, आप खड़े हो गए कि नहीं देंगे हम रिश्वत, आप कामयाब हो गए। आज सरकारी हज की जो शिकायत हैं वो हजारों में हैं और आपकी शिकायत सिर्फ 14 हैं। तो अपनी तारीफ पे तो अच्छी तरह ताली मार दो यार, अगर जो मुफ्ती साहब फिर फतवा ही लगा देंगे। यानी जो शिकायत सरकारी हज की हैं, जिन्होंने कितना 68,000 करवाया, उनकी शिकायत हजारों में है। हमने 90,000 हाजियों को हज करवाया, होप ने, हमारी शिकायत 14 हैं। तो ये वही हज ग्रुप हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही लोग हैं
तब्दीली क्या हुई? तब्दीली ये हुई कि एक अज़म किया, एक इरादा किया, आपने साथ दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी है आपको। मुझे सऊदी अरब से फोन आया, हाफिज तारिक साहब हमारे दोस्तों ने कहा जी सख्ती हो गई, नुस्ख कार्ड नहीं मिल रहा और पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। मैंने कहा 2 दिन बाद, बहरहाल मैंने कोशिश की, 2 दिन बाद हम पहुंचे तो हम शाम को जो हमारी तवाफा कंपनियां थी उनके यहाँ गए। जो सबसे बड़ी कंपनी थी उनसे पूछा कि आपके कितने, उन्होंने कहा जी कि हमारे तकरीबन हमने 12 के 13 हज़ार कार्ड दे दिए हैं, बाकी को तकरीबन 19 या 20 हज़ार रहते हैं। मैंने कहा आपके पास 24 घंटे, हमें 24 घंटे में बाकी कार्ड चाहिए। उन्होंने कहा अब हमें तफसील दे दें, हम करेंगे। 24 घंटे के अंदर उन्होंने 18,000 कार्ड जारी किया। 18,000 24 घंटे में। ये बैठे हैं यहाँ पर इम्तियाज साहब, अमीनुल्लाह भाई, ये गवाह हैं। फिर जब हज खत्म हो गया तो कुछ शिकायत उन्हें भी हमसे हैं, कुछ हमें उनसे है। ये कारोबार है, इसमें शिकायतें हमें भी हैं उन्हें भी हैं। तो एक दिन था मेरे पास, मैं उन 3-4 बड़ी कंपनियों के पास गया कि शुक्रिया, ये मेरी शिकायतें हैं, इनको आपको दूर करना है। एक जगह जरा ज्यादा शोर ज्यादा था, शिकायत तो उन बेचारों की भी 2-3 निकली, लेकिन शोर हम बहुत ज्यादा करते हैं। जब हम कहते हैं लाओ शिकायत लिखी हुई